Today is the second class for this, I think. Yeah. Wait. This is. So we had done, uh, 2 classes on center of mass where we discussed the motion of center of mass, and the last class which we are last part which we were doing in the last class was that if there is no external force uh, acting on an object, the center of mass will keep on moving in the same path as it was moving earlier. So center of mass will remain stationary if there is no external force acting. So either if the body was at rest initially, the center of mass will continue to be at rest, and if the body was moving with uniform speed, the center of mass will continue to move with uniform speed. So only if there is no external force which is acting. So this, we had discussed this as well, that motion of center of mass of bomb exploding in air. So let's say a bomb has been projected from the origin at this point here. This bomb explodes into various parts. So each of these parts will move and fall at different places, but the center of mass of each of these parts, this part and this part, will lie at the same point, will move in the same line as the whole object was initially moving. So center of mass keeps on moving in the same path. So even if there is this explosion of bomb, so parts different parts of bomb moves into in different paths, but eventually the center of mass of all these parts will keep on moving in the same path as earlier. Okay, so this is the basic fundamental. So suppose a bomb is projected at some angle with the ground, it is moving on a parabolic path, suddenly it explodes in flight and splits into number of fragments. So let's say it is exploding in between and it splits into different fragments. Now since the explosion is caused due to internal forces only, right, so the center of mass of the fragment all together will continue to move on the same parabolic path as before explosion. So before explosion जिस parabolic path पे move कर रहा था, the center of mass will keep on moving, है ना, center of mass of each of these particles will keep on moving in the same path. Center of mass will fall at a point of horizontal range. So जब ground पे when it falls, it will be equal to the horizontal range of this initial thing. So we know that when we have projected a bomb with an initial velocity u and angle theta, so in this case the horizontal range r is equal to u square sine 2 theta by g, u square sine 2 theta by g. So sine 2 theta can be written as 2 sine theta into cos theta. So it can also be written as 2u square sine theta into cos theta divided by g, because you can write since sine 2 theta is equal to 2 sine theta into cos theta. ठीक है? Is this clear to everyone? Now, wooden plank of mass 20 kg is resting on a smooth horizontal floor. तो let's say यहाँ पे कोई friction नहीं है इस surface पे. A man of mass 60 kg starts moving from one end of the plank to the other end. Let's say this man starts moving from this end to the other end. ठीक है. इसका जो mass है
इस आदमी का मास 20 kg, ठीक है, is resting on a smooth horizontal floor. A man of mass 20 kg is resting on a smooth horizontal floor, right? Now, so wooden, sorry, mass wood person का mass 60 kg and wooden plank का mass 20 kg, ठीक है. So let's say इसका mass m1 है 60 kg and this is equal to m2 20 kg. A man of mass 60 kg starts moving from one end of the plank to the other. ये इधर मूव करना शुरू किया. सो जब ये मूव करना शुरू करेगा ना तो बिकॉज जब ये वॉक कर रहा है तो ही विल अप्लाई अ फोर्स इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट? सो ही विल अप्लाई अ फोर्स इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन व्हाइल वॉकिंग. हम लोग जब चलते हैं तो पाँव को पीछे की तरफ पुश करते हैं तो ग्राउंड हमें आगे की तरफ पुश करता है. तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता है. हम लोग पाँव से ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं. वी पुश द ग्राउंड फ्रॉम आवर फुट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एंड द ग्राउंड पुशेस अस in the forward direction, right? So action, and because of this action and reaction force, this person, when while he is moving, he'll apply a force in a backward direction, and because of that backward force, this plank moves in the backward direction, in this direction. So a man of mass 60 kg starts moving from one end of the plank to the other end. The length of the plank is 10 meter. Find the displacement of the plank over the floor when the man reaches the other end. मान लो plank पहले यहाँ पे था, ठीक है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन, ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 0 वाला पोजीशन है. बाद में बिकॉज चलते चलते जब उधर चला गया आदमी तो ये प्लैंक जो है थोड़ा सा शिफ्ट कर गया इधर, राइट? सो कितने से शिफ्ट कर गया? लेट्स से द प्लैंक हैज शिफ्टेड बाय अ डिस्टेंस x. जब ये आदमी यहाँ पे पहुंचा तो प्लैंक पीछे की तरफ शिफ्ट कर गया है x, राइट? सो ये आदमी रिलेटिव मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस मूव किया है? ही हैज मूव्ड दिस डिस्टेंस. सो दिस टोटल इज 10. तो इफ दिस इज x, दिस विल बी इक्वल टू 10 माइनस x. इज इट क्लियर बच्चों? You can write when the man moves towards right, the plank is the plank will slip towards left, ठीक है. So when the man moves towards right, the plank will slip towards left, ठीक है. Let the plank slips by a distance x. Let the plank slips by a distance x towards left. The man will move by a distance 10 minus x towards right relative to ग्राउंड. तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये 10 माइनस एक्स डिस्टेंस से मूव किया है ना. ये जब प्लैंक एक्स डिस्टेंस से पीछे गया तो ये आदमी जब इस कॉर्नर पे पहुंचा तो ही हैज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस 10 माइनस एक्स टुवर्ड्स राइट फ्रॉम दिस ओरिजिनल पोजीशन. Now we had seen in the previous class, we had discussed that if the center of mass has to, if the, you know, if the resultant of external force is 0, now since there is no external force acting, no external force acting on the system, m1 into
डेल्टा R1 is equal to m2 into delta R2. तो m1 into change in positions of m1, delta R1 क्या है? चेंज इन पोजिशन ऑफ द m1 ऑब्जेक्ट. तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास विल रिमेन स्टेशनरी, ठीक है, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, the center of mass remains stationary. और उससे आता है m1 डेल्टा r1 इज इक्वल टू m2 डेल्टा r2. सो इसमें जो पोजीशन है ये मूव किया है x डिस्टेंस से, सॉरी ये जो 60 kg वाला है ये मूव किया है 10 माइनस x डिस्टेंस में, और जो प्लैंक है 20 kg का इट हैज मूव्ड बाय अ डिस्टेंस x. तो 60 into 10 minus x is equal to 20 into x. So this is 600 minus 60x is 20x. 600 is equal to 80x, or x is equal to 600 divided by 80. So 7.5 मीटर. ठीक है. सो दिस प्लैंक हैज, तो हमने को यही क्वेश्चन में निकालना था कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक ओवर द फ्लोर. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक ओवर द फ्लोर इज 7.5 मीटर. Is this clear to everyone? Let's go to the next question now. So please explain once more. Just a sec. देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था अभी. पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है किसी सिस्टम में, सो इन दैट केस द सेंटर ऑफ मास विल रिमेन एट द सेम पोजीशन. मतलब कि अब जब ये आदमी इधर चलना शुरू किया, राइट, तो ये प्लैंक पीछे की तरफ खिसकेगा, फिसलेगा, राइट, बिकॉज ही इज वॉकिंग ऑन इट. तो अब ये प्लैंक मान लो इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, अब प्लैंक और आदमी यहाँ पे पहुंच गया, है ना. तो इनिशियली देखो इसका, इस आदमी का और प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहाँ है, आदमी का सेंटर ऑफ मास है, दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है. सो दिस इज द सेंटर ऑफ मास, लेट्स से. अब वो आदमी इधर आ गया है, यहाँ पे आ गया है, और प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया है. इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अभी भी उसी पॉइंट पे ही लाई करेगा, मतलब यहीं पे लाई करेगा. सेंटर ऑफ मास अभी भी इसी लाइन पे ही लाई करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा. क्यों नहीं मूव करेगा? क्योंकि ये जो आदमी इस प्लैंक के ऊपर चल रहा है, ये जो आदमी और प्लैंक है, इन दोनों को मिलाकर हमने एक सिस्टम माना है. सो बिकॉज दिस पर्सन एंड दिस प्लैंक together is a system. So in that case, and there is no external force acting while he is walking towards right, there is no external force acting on this system, man plus plank, है ना. सिस्टम हमारा यहाँ पे मैन प्लस प्लैंक है, और इन दोनों सिस्टम, मतलब इस पूरे सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. तो सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा. तो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पे था, अभी भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहना. मतलब अगर ये प्लैंक पीछे की तरफ, आदमी आगे जाएगा तो प्लैंक को पीछे की तरफ खिसकना पड़ेगा. अगर नहीं खिसकेगा तो सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन से चेंज कर जाएगा. आदमी यहाँ आ गया लेट से,
और प्लैंक यहीं पे है, तो इनका दोनों का सेंटर ऑफ मास तो अब तो कहीं यहाँ आ जाएगा ना, सेंटर ऑफ मास तो मूव कर गया। सेंटर ऑफ मास तब तक नहीं मूव करेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और सेंटर ऑफ मास, और बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है तो सेंटर ऑफ मास को स्टेशनरी रहना है। तो मतलब ये सेंटर ऑफ मास, ये जो प्लैंक है अब पीछे की तरफ मूव कर जाएगा, कितने डिस्टेंस से मूव करेगा? सो ये दिस इज द डिस्टेंस बाय विच दिस प्लैंक इज मूविंग बैकवर्ड। मान लो एक्स डिस्टेंस से प्लैंक पीछे की तरफ खिसक गया, आदमी यहां से यहां मूव किया इस पोर्शन पे, ये प्लैंक जो है टोटल 10 मीटर लंबा है। तो अगर प्लैंक इधर x गया तो यहां पर से इस पोजीशन से ये आदमी का डिस्टेंस कितना आया? 10 - x आया। इज दिस क्लियर? Yes, sir. So yesterday we had done one theorem where we said कि if the center of mass has to remain stationary, then mass m1 into change in position of m1, that is delta r1, and m2 into change in position of m2, which is delta r2. तो ये जो m1 का पोजीशन चेंज किया है वो 10 - x से चेंज किया, तो m1 का मास 60 kg इंटू 10 - x इज इक्वल टू प्लैंक का मास इंटू चेंज इन पोजीशन ऑफ प्लैंक, दैट इज x। इसको सॉल्व कर लिया तो x का वैल्यू 7.5 मीटर निकल गया। तो इससे हमें पता चल गया कि प्लैंक कितने डिस्टेंस से पीछे शिफ्ट किया है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Thank you, sir. नाउ इन दिस क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, द बैलून, the light rope and the monkey shown in the figure are at rest in air. तो initially it was at rest। कौन कौन सा चीज? ये बैलून, ठीक है, उसके बाद ये लाइट स्ट्रिंग, इसका कोई मास नहीं है, लाइट रोप है ना, रोप का कोई मास नहीं है, बैलून का मास होगा। और तीसरा मंकी, यहाँ पे एक मंकी, ठीक है, ये मंकी है ना। तो बैलून और मंकी का पहले लेट से सेंटर ऑफ मास कहीं पे बिलोंग कर रहा था, है ना, लेट से यहाँ पे बिलोंग कर रहा है सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास ये था। अब जब ये बैलून के ऊपर मंकी चढ़ना शुरू करेगा ऊपर के तरफ, तो बैलून भी नीचे की तरफ आएगा जिससे सेंटर ऑफ मास जो है इसी पोजीशन पे रह सके। क्लियर है? क्योंकि बैलून और मंकी, राइट, ये दोनों को अगर सिस्टम माने तो जब ये मंकी ऊपर चढ़ रहा होगा ये इसका इंटरनल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, नाउ सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग, since there is no external forces acting on this balloon plus ठीक है, so since there is no external force acting on this balloon plus monkey system, hence the center of mass of this system will remain stationary। ठीक है, so center of mass will remain stationary, that means m1 delta r1 is equal to m2 delta r2, right। अब ये
मंकी का मास एम, बैलून का मास कैपिटल एम, बैलून का मास कैपिटल एम है, मंकी का मास स्मॉल एम। अब बैलून देखो कितने डिस्टेंस से नीचे आया है, वाई डेल्टा वाई टू डिस्टेंस से नीचे आया है। लेट द बलून shifts downward by a distance delta y2 and the monkey shifts upward या climbs upward। भाई इन दोनों के बीच का जो लेंथ था ना, लेंथ ऑफ द रोप ascended by the monkey is L। तो अब ये अगर L डिस्टेंस इन दोनों के बीच में था, द मंकी क्लाइम्स अपवर्ड बाय, अब बिकॉज ये टोटल जो डिस्टेंस था L था, उसमें से y2 तो यही नीचे आ गया है, तो जो जितना डिस्टेंस ये मूव किया है दैट विल बी L माइनस y2। अगर हम लोग ये पूरा डिस्टेंस L मानते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस यहां तक L मानते हैं, सॉरी, ये डिस्टेंस L मानते हैं। अब जब बैलून नीचे आ गया है, मतलब बैलून का ये वाला पोर्शन भी, जो लोअर पोर्शन है, वो भी डेल्टा y2 से नीचे आ गया, बिकॉज ये डेल्टा y2 है। तो अब जो ये मंकी जितना ऊपर चढ़ा है दैट इज इक्वल टू L माइनस डेल्टा y2, ठीक है। सो द मंकी क्लाइम्स अपवर्ड बाय L माइनस डेल्टा y2। नाउ this means m1 delta r1 मतलब कैपिटल M इंटू डेल्टा y2 is equal to monkey m इंटू L माइनस डेल्टा y2। now अब हम लोग को ये डेल्टा y2 जो निकालना है, इसको कैपिटल M डेल्टा y2 is equal to ml माइनस m डेल्टा y2, इसको इधर ले आएंगे, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू डेल्टा y2 is equal to m into L. So delta y2 is ml divided by capital M plus small m। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सभी बच्चों को? Yes, sir. Now let's go to the next one. So small black block होगा, sorry, the small block
of mass m is placed at rest on top of a smooth wedge. तो ये वेज मतलब ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर ये स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ मास m, ठीक है. So it is kept on the top of a smooth wedge of capital M, mass capital M. तो ये wedge के ऊपर रखा है mass capital M, which in turn is placed at rest on a smooth horizontal surface. तो यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई फ्रिक्शन इस सरफेस पे. मतलब इंक्लाइन प्लेन भी फ्रिक्शनलेस है और ये ग्राउंड भी फ्रिक्शनलेस. ना then the distance moved by the wedge as the particle reaches the foot of the wedge. जब ये पार्टिकल स्मॉल m यहाँ पहुंचेगा उस समय ये वेज कितने डिस्टेंस से मूव करेगा ये निकालना है. तो देखो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है. इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं मान लो इस लाइन पे लाई कर रहा है. तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा इसका इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भी इसी पॉइंट पे लाई करना चाहिए. तो इसका मतलब वेज थोड़ा सा डिस्टेंस मतलब इट विल मूव इन टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन. सो लेट्स से वेज कहीं यहाँ पे आ गया. जब ये इधर आया नीचे तो वेज जो है पीछे इतने डिस्टेंस से मूव कर गया. तो मान लो ये जो डिस्टेंस वेज मूव किया है दिस इज इक्वल टू एक्स. सो द डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस स्मॉल m है ना. ये जो स्मॉल m मूव किया होगा ये टोटल अगर l है ये l है ये x है तो ब्लॉक जो मूव किया होगा वो l माइनस एक्स डिस्टेंस मूव किया होगा. राइट. तो स्मॉल m का जो ब्लॉक है इट हैज मूव्ड बाय डिस्टेंस l माइनस एक्स एंड कैपिटल m this has moved by distance x. Now since there is no external force acting, अब इसका और इसका जो सेंटर ऑफ मास जो है ना वो अभी भी यहीं पे लाई करेगा. तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे लाई करेगा अभी भी. सो एज देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग as there is no external force acting on block plus so as there is no external force so as there is no external force acting on block plus wedge system, the center of mass of the system remains stationary. ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास ऑफ the system remains stationary. So distance moved by let the wedge moves towards left by distance x. When block reaches the foot of wedge. So distance moved by block will be equal to L minus X. So we know that small m into delta R1 is equal to capital M into delta R2. So small m has moved by distance L minus X. Capital M has moved by distance X. So small ml minus mx is equal to capital Mx. So small ml is equal to m plus capital M into x.
So x is equal to small ml by small m plus capital M. Clear बच्चों? Yes, sir. अब एक प्रोजेक्टाइल वाला कर लेंगे, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा. Now, in this question, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a projectile is fired at a speed of 100 meter per second at an angle of 37 degree above the horizontal. At the highest point, the projectile breaks into two parts of mass ratio 1:3. ठीक है. So the lighter piece coming to rest, मतलब उसी समय रेस्ट पे आ गया और डायरेक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड गिर गया. फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट टू द पॉइंट वेयर द हेवियर पीस लैंड. मतलब ये लेट्स से एक प्रोजेक्टाइल मोशन पे जा रहा है. So projectile is fired at a speed of 100 meter per second. U is equal to 100 meter per second at an angle theta is equal to 37 degree. हाईएस्ट पॉइंट पे ये प्रोजेक्टाइल दो पार्ट में ब्रेक करता है. एक पार्ट यहाँ आ जाता है और दूसरा पार्ट कहीं इधर जाके गिरेगा, है ना? इसीलिए इधर आके गिरेगा क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास को इसी के अराउंड, इसी के अबाउट आना है. मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसी प्रोजेक्टाइल मोशन के अबाउट आना है. सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा. ये जो पार्ट है वन इज द लाइटर पार्ट. तो देखो इसका जो मास होगा वो m/4 होगा और इसका जो मास होगा ये 3m/4 होगा, क्योंकि 1:3 के रेशियो में ब्रेक किया है. इट हैज बीन ब्रोकन डाउन इन अ रेशियो m 1:3. तो अगर इसका मास m है तो m/4 ये हो गया और 3m/4 ये हो गया, राइट? लेट्स से ये जो डिस्टेंस है ये x1 है और ये डिस्टेंस x2 है. तो हमें m/4 into x1 will be equal to 3m/4 into x2. Is this point clear to everyone? So by 4 दोनों तरफ कैंसिल हो गया, m और m भी कैंसिल हो गया. So x1 is equal to 3 times x2. अब देखो ये x1 कैसे निकालेंगे. is कह रहा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्चिंग पॉइंट ऑफ द पॉइंट वेयर द हेवियर पीस लैंड्स. तो हम लोग को ये पूरा डिस्टेंस निकालना है. तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए ये पूरा जो है हम लोग पहले रेंज निकाल लेते हैं और रेंज का हाफ करेंगे तो वो x1 होगा, है ना? x1 इज इक्वल टू रेंज का हाफ और ये जो रेंज में x2 अगर ऐड कर देंगे तो r प्लस x2 इस दूसरे का पोजीशन हो जाएगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन. सो रेंज here is equal to u square sin 2 theta by g. मतलब this is तो u square sin 2 theta by g अगर हम लोग निकालते हैं so u square is 100 square sin 2 theta 2 sin 37 into cos 37 divided by g का वैल्यू 10 ले लेते हैं. So this is 1 2 3 4. Sin 37 is 3/5. Cos 37 is 4/5 divided by 10. So 4 3s are 12 and 89 60 meter.
x1 इज इक्वल टू 480 मीटर हो गया. So 480 is equal to 3 times x2. x2 is equal to 480 by 3. So this is 160 मीटर. ठीक है. जब ये 160 मीटर निकल गया, अब हम लोगों को निकालना है टोटल r प्लस. सो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्चिंग पॉइंट. डिस्टेंस ऑफ m2 from launching point. Right. So this will be equal to r plus x2, 960 plus 160, 1120. क्लियर है बच्चों? सेंटर ऑफ मास इतने हैं आज. उसके बाद अब हम लोग लीनियर मोमेंटम करेंगे. ठीक है. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बेसिकली. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? लीनियर मोमेंटम तो हमें पता ही है, मास इनटू वेलोसिटी होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि अगर बस कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हो, ठीक है, सो अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल. पहले तो समझ लेते हैं कि ये जो सिस्टम क्या है और ये सब. सो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल और बॉडीज इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इज कॉल्ड सिस्टम. सो जो पार्टिकल्स हैं जो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं उनको हम लोग सिस्टम मानते हैं. सो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स और बॉडीज इंटरैक्टिंग विद ईच अदर इज कॉल्ड अ सिस्टम. We can define any collection of object or particle as system by defining the boundaries. Now, examples of system: gas in a container is a system of particle with container itself being boundary of the system. Any object, for example, a bomb, is a system of particle exerting forces, intermolecular or interatomic forces on each other. External and internal forces and system of interacting particles. So consider the following examples. ये मास m1 है, m2 है. m2 जो m1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है F12 हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. पार्टिकल्स अट्रैक्टिंग ईच अदर यहाँ पे. और जब ये रिपेल कर रहा है, पार्टिकल्स रिपेलिंग ईच अदर, तो ये देखो F12 बाहर की तरफ, F21 बाहर की तरफ. इन द फिगर is shown a system of two particles of masses m1 and m2. Particle m1 attract m2 with a force f12 and m2 attracts m1 with force f21. Hence force f12 and f21 are internal forces of this two particle system and are equal in magnitude and opposite in direction. So f12 f21 क्या है? Internal forces है, and they are equal in magnitude and opposite in direction. Instead of attraction they may repel each other. Repel नहीं, repel each other. ठीक है. Repel each other. Such a system of two particles repelling each other is also shown. तो यहाँ पे जैसे अब in similar way we may conceive a model of a system of n interacting particles having. तो यहाँ पे तो दो पार्टिकल लिया था, कई सारे पार्टिकल को अगर हम लोग कंसिडर करते हैं m1 m2 और mi mj और mn तक, the force of interaction fij and fji between mi and mj are shown in the figure. Now similar to these, other particles may also interact with each other. These forces of mutual interaction between the particles are internal forces of the system. Any of the two interacting particles, तो ये जितने भी forces ये attraction के या repulsion के एक दूसरे के बीच में, उनको उस system
मतलब अगर सिस्टम में n पार्टिकल है तो जितने आपस में इंटरएक्टिव फोर्सेस हैं वो सारे इसके इंटरनल फोर्सेस होंगे. So hence for simplicity only the force Fij and Fji are shown. Now internal forces exerted forces exerted by particles of system on each other are called internal forces. Internal forces exert from the interaction between the particles within the system. Now internal forces originate within from the system. So originate within the system. For example, intermolecular forces or forces during collision between gas particles of a system with container, its boundary are internal forces. Action and reaction pairs of internal forces lie within the system. Therefore, when we calculate the net force on a system of particle, then the summation of all internal forces is always zero. क्योंकि हमेशा पेयर में होगा और एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है, तो ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. तो नेट इंटरनल फोर्सेस हमेशा जीरो ही मिलेगा. एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है? सो फोर्स, हाँ जी. So like the two particles are interacting with each other, Fij and Fji. So on both of those particles, is there any impact of surrounding particles which were along with them? नहीं, सी जब भी हम फोर्सेस की बात करते हैं ना, तो लॉ ऑफ बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वर्क करता है यहाँ पे. तो अगर दो पार्टिकल के बारे में बात करें तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं. जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उनका जो इफेक्ट होगा वो उसके साथ दूसरा फोर्स हो जाएगा. मतलब आई का के के साथ, के का आई के साथ, जे का Superposition L. होगा. हाँ, उसका मतलब इस फोर्स पे हम जब बात कर रहे हैं दो पार्टिकल के, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं. जैसे चार्ज में हम सुपरपोजिशन पढ़ते हैं हाँ, उनके. जैसे लॉ ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल चार्ज वाले में हम लोग लगाते हैं ना, कूलम्ब्स लॉ में, तो वहां पे दो पार्टिकल को एक बार में कंसिडर करके करते हैं, वैसे ही सेम चीज. Okay. So external forces क्या है? Forces arising from the interaction between the particles in the system and objects outside the system are called external forces. So पार्टिकल्स इन द सिस्टम एंड ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द सिस्टम, उनके बीच में जो इंटरएक्टिव फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स हो गया. Source of external force always lie outside the system. For example, gravitational force on system of gas particle is external force, as gravitational force is exerted by Earth, and Earth lies outside the system, that is container. Now, law of conservation of linear momentum, external और internal force इसलिए जानना जरूरी है कि law of conservation of linear momentum का अगर हम लोग ये पढ़ते हैं, जो स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, व्हेन नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जब नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम विल बी जीरो. Like we are talking about isolated system. हाँ, ऑब्वियसली आइसोलेटेड सिस्टम ही हुआ. एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना, नेट होना जीरो है. अब कोई जरूरी नहीं है आइसोलेटेड हो, कि हो सकता है कि जो सबका सम मिला के, मान लो चार पांच फोर्स लग भी रहा है, तो उनका सम अगर वेक्टर सम जीरो हो गया, तो वहां पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम करे. So according to law of conservation of linear momentum, when net external force acting on a system is zero, its linear momentum remains conserved. So let P1, P2, P3 be the linear momentum of elements of system. Total momentum of system is given by P system is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on. Now let एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम, उसको एफ एक्सटर्नल से हम डिनोट कर रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर सिस्टम, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम. तो जब हम लोग कह रहे हैं एफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस केस में क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी जीरो. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग जीरो कब होता है? जब ये जो है कांस्टेंट होगा तभी जीरो होगा. सो मतलब सिस्टम का जब मोमेंटम कांस्टेंट होगा तब उस समय रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो हो गया या एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गया. सो इन अदर वर्ड्स, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल. जब हम कह रहे हैं सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना ही फाइनल मोमेंटम. So initial momentum of the system is equal to final momentum of the system. Now above equation is equivalent to three scalar
इक्वेशंस, मतलब अगर हम लोग x y z कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर दें, sum of momentum along x axis is equal to constant, sum of momentums along y axis is constant, and similarly sum of momentum along z directions are constant. In other words, in the absence of external force, the component of momentum in different direction remains conserved, or the component of momentum along x-axis, y-axis and z-axis remains conserved. Now, depending upon forces acting on a system, linear momentum might be conserved in one direction. In other words, if a component of the net external force on a closed system is zero along an axis, then the component of linear momentum of the system along the axis cannot change. Now, examples of conservation of linear momentum. तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे, उसमें भी यूजफुल होगा ये. सो एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. So bullet fired from a gun. So suppose a bullet of mass m is fired from the gun of mass capital M, right? So bullet of mass small m is fired from the gun of mass capital M. Let v is the velocity of gun with respect to ground, which is equal to velocity of recoil. Okay. Now v is velocity of bullet with respect to ground. Initial momentum of the system 0 है. Final momentum क्या होगा? Bullet आगे move कर रहा है, gun पीछे जा रहा है capital MV से. So for gun bullet system, no external force is involved in firing. So gun pushes the bullet and bullet pushes the gun. These forces are internal to the system of gun and bullet. So from conservation of linear momentum, net momentum of the system before firing of bullet is net momentum of the system after firing of bullet. अब इनिशियली मोमेंटम जीरो है, फाइनल फायरिंग करेंगे तो m इंटू वी बाई कैपिटल m इंटू कैपिटल v. So this is basically v is equal to m by m into v. So direction of v is opposite. So इसको थोड़ा ऐसे लिखें, कैपिटल v is equal to minus m by capital M into small v. नेगेटिव साइन ये बताता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है. To keep center of mass. ठीक है. सो डायरेक्शन ऑफ v इज, हाँ वही बात है ना, सेंटर ऑफ मास को वहां पे. सो डायरेक्शन ऑफ v इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ स्मॉल v इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल V. अगर हम मैग्नीट्यूड बस लिखें तो स्मॉल m बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल v विल बी द रिकॉइल वेलोसिटी. अब बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू अ स्टेशनरी ब्लॉक. मान लो हम लोग किसी ब्लॉक पे फायर करते हैं, बुलेट उसके अंदर चला जाता है और बुलेट और ये ब्लॉक दोनों अब साथ में मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी से. ठीक है. सो लेट्स से इनिशियली बुलेट जो मूव कर रहा था वो स्मॉल v से मूव कर रहा है. So suppose a bullet of mass m moving with velocity small v hits a block of mass capital M lying at rest on smooth floor and gets embedded into block. Now let capital V is common velocity of bullet and block system. From law of conservation of linear momentum, momentum before system, so momentum of system before collision कितना होगा? Small m into v. और मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, जब इसमें अंदर चला गया तो अब इसका टोटल मास क्या हो जाएगा? स्मॉल m प्लस कैपिटल M. और ये पूरा जो है ब्लॉक और बुलेट सिस्टम ये कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. तो यहाँ पे कैपिटल V विल बी mv बाय स्मॉल m बाय प्लस कैपिटल M. तो ये इस वेलोसिटी से साथ में मूव करेगा. तो ये बुलेट जब एम्बेड कर जाता है स्टेशनरी ब्लॉक में तब ये हमारा सिनेरियो होता है. थर्ड केस है
when the bullet of mass m comes out after penetrating the block of mass capital M, तो मान लो ये small m मूव कर रहा था, है ना, with small v velocity, और जब ये इससे टकरा के ये बाहर निकल गया, मतलब इसके थ्रू जाके बाहर निकल गया, तो जब ये बाहर निकल गया इसका वेलोसिटी v1 है, ठीक है, कम्स आउट विद अ स्पीड v1 बेसिकली, ठीक है, स्मॉल v1 कर लो, comes out with a speed v1, let v is the speed of block after bullet coming out of it, right? ब्लॉक का स्पीड जब ये बाहर निकल रहा है इज कैपिटल v, सो इनिशियल मोमेंटम इज m इंटू v, उस समय ये रेस्ट पे था, फाइनल मोमेंटम इज कैपिटल m इंटू कैपिटल v प्लस m इंटू स्मॉल v1, तो अब हम लोग को कैपिटल v निकालना है, तो m v माइनस v1 बाय, ये हमारा कैपिटल m हो गया, ठीक है। Now bomb at rest explodes into two parts, right? So suppose a bomb initially at rest explodes into two parts of masses m1 and m2 with velocity v1 and v2. Okay. So let us suppose a bomb which is initially at rest explodes into two parts of mass m1 and m2 with velocity v1 and v2 respectively. As bomb was at rest, momentum before explosion is equal to 0 and momentum after explosion is m1 v1 plus m2 v2. Now bomb explodes under the action of internal forces, ठीक है, तो मान लो एक बॉम्ब है, एक्सप्लोड किया दो पार्ट में, इसका मास m1 है, इसका स्पीड v1 हो गया, और इसका मास m2 है और इसका स्पीड v2 हो गया, ठीक है। तो वेक्टरली अगर हम लोग देखें m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बॉम्ब एक्सप्लोड अंडर द एक्शन ऑफ इंटरनल फोर्स, नो एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉम्ब इज 0, सो मोमेंटम ऑफ सिस्टम of two parts after collision is equal to momentum of system before collision, so m1v1 is equal to minus of m2v2. Now negative sign implies that both parts move in opposite directions. In terms of magnitude, m1 v1 is equal to m2 v2. So that means v1 by v2 is equal to m2 by m1. Now velocity of a part is inversely proportional to its mass, right? So देखो inversely v1 by v2 is m2 by m1, तो inversely proportional to its mass, it means velocity of lighter part will be more as compared to heavier part. Lighter part का velocity ज़्यादा होगा, heavier part का velocity कम होगा, ठीक है। Kinetic energy अगर दोनों का निकालेंगे, half m1 v1 square is p square by 2 m1 और p square by 2 m2, मोमेंटम सेम है तो जो जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, राइट। सो k1 बाई k2 अब करेंगे तो m2 बाई m1 यहाँ पे आ रहा है। This is not important. ना मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चंस कल हम लोग करेंगे, है ना। सो या फिर एक आध इजी वाला क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेट अस डू इट टुमारो ओनली, है ना। So I'll sort it out for you and the questions, and then we can complete conservation of linear momentum. Again, I was reading it.
Okay, have you read it? Yes. So we'll stop here.